Guys, in last session we discussed about the dielectric means capacitor with dielectric and the different basic theory based on this. Okay, in this session we saw some example based on the same topic, capacitor with dielectric. First we saw the textbook example number 9 from the exercise. Okay, what is the problem statement? Explain what would happen if in the capacitor given in the above question. Means above question is example number 8. So I am just write down the given data from the 8. Example number 8 is like this. Okay, this one is given to us, and here 3 mm thick mica sheet is placed with the dielectric constant is what, 6. So if you place a one mica sheet having a dielectric constant K is equal to what, 6 into this capacitor, then what happened? So if you consider this capacitor, so here nothing is placed, this capacitor is like this, and that is a one battery V, here the plus q charge, here the minus q charge, and this case is given to us. Okay, this type of situation is given to us, and thus here distance is d, everything is given in a example number 8. Okay, and this data are fine, whatever we find here from in example number 8. I'm just write the answer directly. Okay, so this type of situation without dielectric capacitor is given in example number 8. So this is without dielectric. Okay, now you put the dielectric, but here again two cases, when the voltage is connected and when the voltage is disconnected. So here voltage is connected, this comes battery connected and battery disconnected. So let's we discuss the both the case. So case number first, battery is connected, and the case number 2, battery is disconnected. So we have two cases and we have to find this situation. Means we find the three data C, Q and V. So battery is maybe connected, maybe disconnected. Capacitance always write C dash is equal to K into C as we derive this relation. Okay, so new capacitance C dash is equal to Kc. So C dash is equal to K is what, 6, and C is what, 17.7. So 6 into 17.7, and the answer is in picofarad. So that is your first answer, C dash. Okay, you just calculate this one, 6 multiplied by 17.7. So this is our first case. Now comes to the second case, battery is connected or battery is disconnected. Then what happens? If battery connected, then the situation is like this. This is the capacitor, here is the battery. Okay, V voltage, and you just put one dielectric here like this. You put a dielectric substance like this into the capacitor. Then see, V remains connected, means V is always constant. So in this case C dash is equal to what, 6 into 17.7 picofarad. V dash is equal to V is equal to what, constant as we know. So V का कितना है यहाँ पे, V is equal to 100. So इस केस में भी कितना आंसर रहेगा, V does not change, but here the charge, whatever the charge is coming here, Q dash is change. So this is Q dash and minus Q dash. So when you put this dielectric into the capacitor, additional charge is flow through here. Additional charges flow through here. So what is this Q dash? So here Q dash is equal to K into Q as we derive this relation again. So what is K? K is a 6. Okay, and what is Q? Q is a 1.77 into 10 raised to minus 9. So 1.77 into 10 raised to minus 9 coulomb. So you just calculate this answer by yourself. Okay, so calculation is in homework when battery is connected. Now comes the battery is disconnected. Disconnect means what? Here the already Q charge is present, here the minus Q charge is present, battery does not connected here. Right now it is disconnect. So battery को disconnect कर दो. Now you put a dielectric constant here, sorry, dielectric substance here. So here you put the dielectric substance like this. So in this case capacitance is same as 6, C dash is equal to 6 into 17.7 picofarad. Here battery is not connected, means here it is not possible to additional charges come over here. So the charge is remains constant after connected. So Q dash is equal to Q is equal to 1.77 into 10 raised to minus 9 coulomb. But V is change here. So what is V dash? So V dash is a V by K as we derive this relation. So this V dash is a V by K.
तो V कितना है 100 अपॉन K कितना है 6। इसका आंसर जो है काउंट कर लेना वोल्टेज, ठीक है। सो कैलकुलेशन होमवर्क में करना है कि जो भी थ्योरी हमने लास्ट सेशन में डिराइव की थी, तो भी थ्योरी हम लास्ट सेशन में डिस्कस की थी, वो थ्योरी का डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज करके इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस एग्जाम इन योर बुक्स, देन आफ्टर वी आर गो टू दिस नेक्स्ट वन। Okay guys, comes to the next example, illustration number 2.8 from the textbook. Now what is the problem statement? A slab of material of a dielectric constant K has the same area as the plate of a parallel plate capacitor, but has a thickness 3/4D, where D is the separation between two plates. Then how the capacitance is changed when the slab is inserted between the two plates? Means the initial condition is what? Without this substance. So initial condition is given like this. This is the one capacitor, consider. This is the one capacitor, consider. So suppose here it is plus Q charge, here it is minus Q charge. Distance between the two plates is what? D. Area of the plate is supposed to be A. So the case is what? The capacitors, original capacitors आप C लेते हो तो C is equal to क्या हो जाएगा? Epsilon naught A upon D. That is very well known equation. This is a very well-known equation. Okay. Now you have a one dielectric substance, but its thickness is what? 3/4D. You have a one dielectric substance. Its thickness is what? 3/4D. And if you insert into this one, then how this capacitance is changed? मतलब कि new capacitance कितना हो जाएगा? So in the same one, what is the final condition? Final condition means with dielectric. Okay, this is without dielectric. Without dielectric. Now this is the with dielectric. What is the situation? Now you can draw the same figure for more understanding. Suppose we have to draw the same figure. This one is given to us. Now here plus Q charge, here minus Q charge. Charge does not change. Charge does not change. But यहाँ पे आपने कुछ dielectric place किया ऐसे. But its thickness is given to us. What is the thickness? Actually, thickness is given to us, and this is a it is given to 3/4D. This one is what? 3/4D only. This you not place the dielectric substance in a whole capacitor. You just put this dielectric in some space only. This area is same. So this area is there. This area is also there. But the remaining is how much here? Remaining is D/4. So within that 3/4D, there is a dielectric substance is present. Here is dielectric substance is not present. So situation is like this. But now, right now the charge does not change. So this problem is solved by this two method. You consider this combination of capacitor, or you consider the Q is equal to CV. So we have to solve this problem by both way. So what happen in this case? So मान लो कि इसका कैपेसिटेंस है वो है C dash. तो आपको फाइंड करना है what is this C dash. You have to find this C dash here. Okay. So if you consider this situation, so in this situation what happen? Q is equal to CV. And if you consider in this situation, then what is the Q here? So Q is equal to C dash V dash actually. So आपको यहाँ पे V dash find करना होगा. You must be find the V dash here. So what is this? What is the basic theory you consider we have to here? If you consider this one, then within this electric field is what? Suppose E is the original electric field. E is what? When you not place anything, what is the electric field present here? That is E. Then what is the electric field present within the substance? That is E/K, as we know. And what is the electric field in remaining space, in this space, within this space? This is E, because यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, एरी है, तो यहाँ पे अपोजिट मतलब इंड्यूस चार्ज तो इसमें ही प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस चार्ज यहाँ पे ही होगा. So here the electric field is decreased by K, but यहाँ पे electric field ऐसे ही रहेगा, same to same, no change. So here electric field is E/K, here electric field is E. तो अगर ऐसा मान लो कि इस दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V1 है और इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो टोटल V डैश कितना होगा? व्हाट इज दिस V डैश हियर? V
2. Then in this situation V dash is actually what? V1 plus V2. This problem is solved by the different two methods. Okay, we solve this problem by both. So that is the method number 1 whatever we solve here. So इसको आप इक्वेशन नंबर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो. नाउ पोटेंशियल फाइंड करते हैं पहले, उसके बाद इसमें रख देंगे. ठीक है. सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब इस पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल. तो V इज इक्वल टू क्या होता है? ED होता है. V इज इक्वल टू व्हाट? ED. तो यहाँ का E कितना है? E बाई के. सो दैट इज व्हाट? E बाई के. सो E बाई के. इसका D कितना है? 3 बाई 4D. सो 3 बाई 4D प्लस व्हाट इज दिस V हियर? So what is the electric field here? E. So that is E. And what is the space? D by 4. So that is D by 4. Okay. So sorry, यहाँ पे V dash my mistake क्योंकि V dash है. So what we have to write here? V dash is equal to, see here E and here D. E and D just common out. And यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, उसको भी कॉमन ले लो. तो आंसर क्या होगा? E into D. E into D upon this 4. So upon this 4. So write the remaining as it is. So यहाँ पे हुआ 3 by K प्लस यहाँ पे तो पूरा कॉमन है तो प्लस आ गया 1. So इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. तो ED को क्या बोल सकते हैं? इसमें अगर V है तो इसमें V क्या होता है? What is the V here? That is V is equal to E into D होता है. यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है तो V क्या होता है? E into D. तो यहाँ पे E into D की जगह पे V रख दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? V dash is equal to V by 4 into इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो. So K plus 3 upon K. So this is the V dash. So let's we put this value here so we get the final answer. So new capacitance C dash एक्चुअली यहाँ पे ही रखना है. आप ऐसे रख दो. C dash इज इक्वल टू Q अपॉन V dash इज इक्वल टू Q को ऐसे ही रखो और Q की जगह पे आप CV भी रख सकते हो. ओरिजिनल के फॉर्म में लाना है तो उसकी जगह पे आप रख दो CV अपॉन V dash की जगह पे पूरा रख दो, है ना. तो आंसर क्या होगा? V dash इज इक्वल टू V by 4 इंटू K प्लस 3 अपॉन K. सो इंटू K प्लस 3 अपॉन K ऐसा कुछ होगा. सो दिस इज द सिचुएशन. नाउ V कैंसल आउट, दिस डिनोमिनेटर कम्स टू द न्यूमरेटर. सो C डैश आ गया आपका 4K अपॉन K प्लस 3, 4K अपॉन K प्लस 3 into C, where C is what actually? What is the C here? C is the original capacitance. C is equal to epsilon naught A upon D. ओके. सो इस तरह से आप जो फर्स्ट मेथड है सॉल्व कर सकते हैं. पहले नोट्स कर लो, उसके बाद इसी एग्जांपल में सेकंड मेथड पे चलते हैं. नोट करो चलो. Okay guys, let's come to this next one in the same one. Now I'm drawing this figure again here. So what is the situation? That is the method number 2. Here we use the concept of combination of capacitor. इस concept से यही example को solve करते हैं. So let's we draw the same figure. So this is the first one, second one. Okay, this type of situation is given to us right now. Now in some of the space dielectric substance is placed. So here it is dielectric substance with a dielectric constant K. Now what is this area of this plate? So area of the plate is supposed to be A. What is the distance of this one? That is 3 by 4D. So what is the remaining distance? So here it is D by 4. This type of case is given to us. Okay. So actually what is this? This one is forming a first capacitor and here it is forming a second capacitor. Both are in series. Both the capacitors are connected in series actually. So first part, this one is considered as the first capacitance. This one is considered as the second capacitance and this both capacitors are connected in series. So we use the direct equation, we get the answer. तो इसका हम कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ पे A पॉइंट्स ले लो, यहाँ पे B पॉइंट्स ले लो. So that is the first capacitor C1 and here it is the second capacitor C2 is connected to B like this. So exactly both are same. C1 is what? The capacitor with dielectric. C1 is what? Capacitor. Here C1 is equal to capacitor with
dielectric. And what is the C2? Capacitor without dielectric. ऐसा है? So capacitor with dielectric and capacitor without dielectric. You just write the answer in this form. You get the answer. Okay. Now what is the C1 and what is the C2 here? So आपका D इसमें इतना है, आपका एरिया इतना है, तो C1 का आंसर क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कितना है? 3/4D. Actually I am just using this equation एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है तो मल्टीप्लाई बाय K. C2 का आंसर क्या आता है इसमें? सो C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपन उसका D कितना है? D/4. सो हियर इट इज D/4. वहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो K नहीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. सो दैट्स यू गेट द C1 एंड C2. नाउ द टू कैपेसिटर आर इन सीरीज. यूज द सीरीज इक्वेशन. सो व्हाट इज इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस? सो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, सीरीज के लिए इक्वेशन क्या है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. डायरेक्टली दो ही है, तीन है तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ओके. एक्चुअली यहाँ पे C डैश सिंबल यूज किया था, यहाँ पे अभी आप C डैश ही यूज करो. ओके, बिकॉज यहाँ पे C इसको बोला है तो आप यहाँ पे C डैश यूज करो, यहाँ पे भी C डैश है. सो दैट इज वन. नाउ यू पुट दिस ऑल दिस वैल्यू हियर. सो व्हाट इज C1? एप्सिलॉन नॉट A upon this 4 is comes in a numerator, so 4 upon 3D into K into C2 क्या है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, डिनोमिनेटर कम्स टू न्यूमरेटर, सो 4 अपॉन इन दोनों का समेशन, सो 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D into K प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. इसमें से 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को कॉमन निकाल लो तो फिर आंसर क्या होगा? सो C डैश इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D इंटू K इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. डिनोमिनेटर में कॉमन निकालो, 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. राइट डाउन द रिमेनिंग एज इट इज. सो K/3 प्लस 1. इफ एनीथिंग इज कैंसल देन कैंसल इट. सी 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कैंसल. Okay, so write down the remaining data as it is. So is equal to 4 epsilon naught A K, 4 epsilon naught A K, okay, 4 epsilon naught A K upon 3D. So that is 3D. इसका simplify करो. So K plus 3. So K plus 3 upon 3. ऐसा ही कुछ होगा. So 3 cancel करो. 3 cancel. So write down this remaining. This is our answer. So C dash is equal to, what is the answer? 4K एप्सिलॉन A अपॉन D को साइड में रख दो ऐसे, अपॉन K प्लस 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. ऐसा कुछ होगा ना. व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D? एक्चुअली ओरिजिनल उसको C लिखा है हमने, तो यहाँ भी अगर विदाउट डायलेक्ट्रिक आपने C को आप C लिखना चाहते हो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ओरिजिनल और इनिशियल, और वी कॉल इट इज initial capacitance. Then how we write this answer? इसको C से रिप्लेस करो तो C dash is equal to 4K upon K plus 3 into C. You see, you get the same answer whatever we write here. Here C is equal to what? Epsilon A upon D. Do you understand how to write this one? So this is the case. Okay, so all of you guys note this example in the books, then after we go to the next one. Okay guys, let's come to the we write one special notes here. If you place this dielectric anywhere between these two plates, there is a net capacitance is changed or not. If you place this dielectric at this left hand side plates, at the right hand side plates, at the middle, then your capacitance is changed. Then answer is what? No. So you must be right here. The capacitance of the system, when the dielectric substance is placed between the two plates partially, okay, this partially filled capacitor, this new capacitor does not depends on the position of this dielectric substance. You must be noted. So write down this note. In a partially filled capacitor, capacitance does not depends on the position of a capacitor. Position of a dielectric substance. My mistake. Position of a dielectric substance.
Okay, that's very helpful note for us. If you write this, then you just place made this capacitor like this, no problem. एक कैपेसिटर है आपका, अगर आपने कहीं पे भी इसको रख दिया डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, कहीं पे भी, इसका आंसर कितना है 3D/4 ऐसा है, तो भी इसका कैपेसिटेंस इतना ही रहेगा. सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ पोजिशन. ओके, आपका कैपेसिटेंस आप इस तरह से फाइंड करते हो या फिर इस तरह से फाइंड करते हो, आंसर आपका यही आएगा. क्लियर है सबको? चलो नोट्स करो इसको. Okay guys, let's come to the next one, and that is what the multiple dielectric slab in a capacitor. Up to this we only consider only one slab is placed inside the capacitor. If the number of slabs are present inside the capacitor, then how we define this combination is in series or the combination is in parallel. Okay, so let's start with the first series combination. If this type of arrangement is given to us, we call it a series combination. But how to identify if any slabs are in series or any slabs are in a parallel? So here the different slabs are given to us, K1, K2 and K3. If any slabs divide the length, if any slabs is just divide the length, but area for the whole slabs are same. See, so here if any slab divide the length, okay, यहाँ पे total distance कितना है? What is the distance between two plates? Suppose it is D. If total distance between the two plates is supposed to be D, and thus whole the slabs are divide the length, area for all the same slab same, then we call it a series combination. So in case of series combination, what do you have to remember? Length is divided, area is same. If length is divided and the area is same, then this type of combination is called a series combination. Or we also call here the slabs are parallel to the plate. See, ये plates है और ये slabs है. So यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी डिसाइड कर सकते हो. The slabs, this all slabs are parallel to capacitor प्लेट्स. अगर ऐसा कुछ है तो जितने भी कैपेसिटर यहाँ पे बनते हैं और सारे कैपेसिटर किस में होंगे? सीरीज में होंगे. मीन्स व्हाट? इफ यू कंसीडर दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, सो हियर यू कंसीडर पॉइंट ए, हियर यू कंसीडर दिस पॉइंट B, you consider this point A and B like this. So here the three capacitors are formed, capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, but all are connected in series. So this is the C1, the second capacitor C2 and the third capacitor 3 are connected in series like this. So यहाँ पे आपको equivalence के लिए क्या करना है? What do you have to do here for equivalence? So इसका equivalence find करने के लिए 1/C equivalence is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. You just apply this relation and you get the answer. But what is C1, C2 and C3? You must be remember this one. And how to write the equation of C1, C2 and C3 in this type of cases? So पहले तो C1, C2 ऐसे कनेक्ट करने, C1, C2 इक्वेशन में रखने, फाइंड करना है what is the C1, what is the C2 and what is the C3. So how to write this C? So here we have to write the C1. अगर C1 लिखना है तो इतना ही कैपेसिटर रहेगा, इतना ही मतलब एप्सिलॉन नॉट. एरिया डज नॉट डिवाइड, एरिया सेम है, कितना एरिया है A, सो एरिया इज A, बट लेंथ इज चेंज. व्हाट इज द width of this one? T1. so upon D आता है epsilon not A upon D. That's the equation of capacitor, parallel plate capacitor, but here D is replaced by T1, so that's a T1. Now the second one, what is C2? We have to write here. So C2 is equal to epsilon not A. What is the length of the C2? That's T2, so upon T2. And what is C3? Epsilon not A upon what is the length of this one? T3. So this is the C1, C2 and C3. You just put all this value into this equation, you get the answer of equivalence capacitance for this given system. But here you must be identified if capacitors are in series or this capacitor are in parallel. So this is the one method to decide this capacitor are in series or parallel. Okay, now it is method for series. Now comes to the second one, parallel combination. If this type of combination is given to us, then we call it is parallel combination. So here length for all same, area is divided. So if area is divided, then we call it is a parallel combination. तो यहाँ पे आपने लेंथ को डिवाइड किया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? What you have to do here? Here the area is divided, but
length does not. ओके तो मतलब लेंथ इज सेम, ऐसा भी रख सकते हो, लेंथ इज सेम फॉर्मेट रखते हो. ओके सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वी कॉल इट इज अ parallel combination. And in this case of parallel combination, the slabs are perpendicular to the capacitor plate. यहाँ पे slabs are parallel to the capacitor plate, है ना. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, और आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, और the slabs are perpendicular to capacitor प्लेट्स को परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, प्लेट्स को पैरेलल बोल रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है. लेकिन इजी मेथड तो ये रहेगी, लेंथ डिवाइड करता है तो सीरीज में रखो, एरिया डिवाइड होता है तो पैरेलल में रखो. दैट्स द इजीएस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. ओके सो हाउ टू ड्रॉ दिस फिगर एक्चुअली. सो हियर 3 कैपेसिटर आर गिवन टू अस between A and B. So this capacitor are just drawn in such a way. See, this is the point. This is the point A and here is the point B. So this first capacitor, the second capacitor, and here it is third capacitor. So first capacitor, second capacitor, third capacitor are connected in series, parallel like this. Sorry, C1, C2 and C3. So what is the C equivalence here? So use the parallel equation, parallel plate capacitor equation in parallel combination equation. So C equivalence is equal to C1 plus C2 plus C3 directly. यहाँ पे इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर रहे हैं. यहाँ पे इक्वेशन होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3. यहाँ पे इक्वेशन C1 प्लस C2 प्लस C3. बट व्हाट इज द C1, C2 एंड C3 हियर लाइक दिस. सो यहाँ पे आप C1 का आंसर लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट A. बट व्हाट इज द एरिया फॉर द फर्स्ट K1? दिस एरिया इज A1. सो एरिया एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन दस डिस्टेंस इज D. सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे मैं भूल गया. दस 1 इज K1. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो K1 से, है ना, और बाकी रह गया एक्चुअली यहाँ पे वो भी लिखना है. दैट्स K1, हियर इट इज K2 एंड हियर इट इज K3. क्योंकि डायरेक्ट्रिक प्रेजेंट है तो डायरेक्टली से मल्टीप्लाई भी करना है यहाँ पे. सो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय K1. व्हाट इज C2? सो C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A. बट विच A2, विच एरिया इज फॉर सेकेंड वन इज व्हाट, A2. सो A2 अपॉन D तो सेम ही है तो D. व्हाट इज C3? सॉरी यहाँ पे भी K2 से मल्टीप्लाई करो. एवरी टाइम यू जस्ट मल्टीप्लाई द K whenever the dielectric slab is present. Okay, and the C3 is equal to epsilon naught A. But which A? A3. So here A3 upon D, क्योंकि उसकी भी लेंथ D है, into K3. I am just forget here, but you must be remember whenever you connect this different slabs means you just put the different slab into the capacitor. At that time use this theory, and capacitance equation is right in this format, must be multiplied by the K here, whatever the K is given, K1, K2, K3, K4, K, whatever the K is given to you, just multiply, you get the answer. Do you understand how to get how to just write the C equivalence in this type of case? So this is the method for series combination, this is the method for parallel combination. Okay, let me solve one example for more understanding. So here one example is given to us. Find the equivalence capacitance of the system. तो यहाँ पे 3 slabs है, K, 2K and 3K. So this one is D/2 तो K2K और 3K इसमें लेंथ डिवाइड, तो A दोनों कैपेसिटर में किस में है, सीरीज में. यहाँ पे K और 2K में देखो एरिया डिवाइड होता है A/2. तो ये टोटल A है तो इसका भी कितना होगा, A/2 ही होगा. इसका भी कितना होगा, A/2. इसमें एरिया डिवाइड होता है तो एरिया डिवाइड होता है तो क्या होगा उसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन. और इसमें लेंथ डिवाइड होती है तो लेंथ डिवाइड है तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन. मीन्स यू जस्ट ड्रॉ द कैपेसिटर इन सच अ वे, दैट इज द फर्स्ट कैपेसिटर, हियर इट इज द सेकंड कैपेसिटर एंड हियर इट इज द थर्ड कैपेसिटर. सो दिस वन इज द फर्स्ट, this one is the second, this both are connected, so this both are connected. See, ये दोनों कनेक्टेड है. इसके साथ यहाँ पे से थर्ड कैपेसिटर, तो ये थर्ड कैपेसिटर. यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, B. यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, A. एक्चुअली दिस बोथ द सर्किट्स आर सेम. इसको आप मान लो C1, इसको आप मान लो C2, इसको आप मान लो C3. सो हियर इट इज C1, हियर इट इज C2, हियर इट इज C3. डू यू अंडरस्टैंड?
सी इन दिस बोथ कैपेसिटर एरिया को आपने डिवाइड किया, लेंथ तो दोनों के लिए सेम ही है देखो, सो लेंथ को डिवाइड नहीं किया, एरिया को डिवाइड किया, मींस इफ यू डिवाइड द एरिया कॉम्बिनेशन इज पैरेलल, सो C1 and C2 आर इन पैरेलल. Okay, now in this case area does not divide, so area is same, length is divide, total length this इसमें divide 2 कर दिया, तो length divide की मतलब this one is in series, तो ये पूरे combination के साथ इसको सीरीज में रखो, तो इसका इक्विवेलेंस फाइंड कर लो, इसमें C1 C2 C3 की वैल्यू रख दो, तो इस इतने का इक्विवेलेंस कितना आता है, सो दिस बोथ आर इन पैरेलल, अगर ये पैरेलल में है तो इसका क्या आता है, C1 प्लस C2 आता है, C1 प्लस C2, मतलब टोटल इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना होगा सीरीज के लिए, सो C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू लाइक दिस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा कुछ होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस, so C1 C2 इज दिस वन एंड C2 इज दिस वन. ओके, मतलब वो इक्वेशन सीरीज का यूज करो तो आंसर क्या होगा, C1 प्लस C2 इंटू C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3. I am just use this equation for series, C equivalence is equal to C1 C2 upon C1 plus C2. लेकिन यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटेंस है, तो इसकी जैसे वैल्यू रख दो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन का. ओके, सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस इक्वेशन. सो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस is given by this equation. But what is C1, what is C2 and what is C3? So let's we write this answer for C1 C2 C3. So where C1 is equal to epsilon naught. What is the area of C1? A by 2. So put this as A by 2. So here it is A by 2 upon. What is the length? Length of the C1, this one, D by 2. So length you just put D by 2. So 2 cancel. इसका आंसर कितना आया? Epsilon, sorry, my mistake. What is this K? So here it is K. So multiply it by K. So into K. So what is your answer? So C1 is equal to 2 cancel epsilon naught A upon D into K. So that is a C1. Okay. Now comes to the C2. So C2 means this. So epsilon naught into what is the area of this one? Again A by 2. So put the area is equal to A by 2 upon what is the length of this? So length is D by 2. So put here D by 2 into what is the electric constant for this one? 2K. So multiply by 2K. Do you understand? So if anything is cancelled, then 2 cancel here. So write down the answer, epsilon naught A upon D into 2K. So this one is what? C2. Now find the C3. C3 means this one. Okay, so epsilon naught, what is the area of this? Area is same, see area इतना है तो area ही रखो इसमें A, but what is the length of C3? Length of C3 is D by 2, तो यहाँ पे रख दो D by 2 into dielectric constant कितना है 3K, so here you put it is 3K. सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. सो इसका अगर इक्वेशन किया तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर, सो 3 into 2 6. सो द आंसर इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इनटू 6K. So that is C3. So all those values are known. Put here, you get the final answer. So what is your final answer? So C equivalent, I am just put the all value here. Okay, is equal to C1 plus C2 into C3. इन दोनों का सम करो C1 plus C2. So epsilon naught A upon D, epsilon naught A upon D common out. So epsilon naught A upon D common out. Okay, यहाँ पे K plus 2K, that's the 3K. So that's C1 plus C2 plus, so sorry, into C3. What is C3? Epsilon naught A upon D. So epsilon naught A upon D into 6K divided by summation of all. So all this in the whole equation, epsilon A upon D is common out. So epsilon naught A upon D is common out. Okay, K plus 2K plus 6K. K plus 2K plus 6K. So 1 plus 2 plus 6. So 3 plus 6 9. So total यहाँ पे आएगा 9K. If anything is cancelled, then cancel it. Simple है, यहाँ पे epsilon naught A upon D cancel. Here this K cancel. Okay, 3 जा 3 2 जा. So कितना बाकी है और आप यहाँ पे रख दो, आपका आंसर हो जाएगा. So C equivalence is equal to epsilon naught A upon D into K into 2. So आंसर हो गया 2 epsilon naught A upon D into K. So this is your final equivalence capacitance of this given system.
So by this way you just getting this answer. Do you understand how to get this? So this is the method to get the answer of the C equivalence when the multiple slabs are present into the capacitor. यहाँ पे वैल्यू डिफरेंस हो सकती है, अरेंजमेंट भी डिफरेंस हो सकता है, बट यू जस्ट डिफाइन द which capacitors are in series and which capacitors are in parallel. You just convert this type of circuit into this type of circuit. Then after use this equation of C equivalence and get the answer. Okay, how to write the C? C is always epsilon naught A upon D into K. C is always epsilon naught A upon D into K, where you just put the value of A and D properly. Okay, जितना भी A है उतना एरिया लिखना है, जितना भी K है उतना K लिखना है, जितना भी D है उतना D लिखना है. Do you understand? चलो एग्जाम्पल और थ्योरी आपकी बुक्स में अच्छी तरह से नोट्स कर लो और इसको आप टाइटल दो एडिशनल नोट्स. All of you guys just use the title additional notes. Okay, नोट करो चलो. Okay guys, comes to this next one, that is the partially filling of a dielectric slab in a capacitor. Means this we are not put the we are not filling this whole portion, whole volume of the capacitor with the dielectric, but partially filled like this. Here this some of this portion of this capacitor is just we put one dielectric substance. Okay, the remaining is as it is, there is no any change. So how we get this answer? So here the three capacitors are formed. This is capacitor 1, this is capacitor 2, and it is capacitor 3. Okay, here you can say this one, here the air is present. It means in this section nothing is present. Nothing is present means that is the dielectric constant is equal to what? 1. Okay, you just consider, suppose the dielectric constant for this substance is K, and here for this section dielectric constant is 1, for this section dielectric constant is what? 1. So we consider there is no section, nothing is present. Nothing is present means there is a dielectric constant is considered as a 1. Okay, now we don't know what is this and what is this. Let's take this, suppose this one is a X, this one is a Y. Okay, so this is the situation where we have. So here how many capacitors form? 3 capacitors are formed. Capacitor number 1, capacitor number 2, capacitor number 3. So let's solve this one. So this circuit is exactly equivalent to this one. This is C1, C2, C3, and this one is a B. So C1, C2, C3. Okay, what is a C1 actually? If you want to write the answer of C1, so C1 is a epsilon naught A upon area is same for all. Consider the area of the plate is A. Area is A upon why it is in series. Length is divided X, Y, and this one is T. What is this length? D. So length is divided, so all are in series. So we use this equation epsilon naught A upon what is this length? This first one is a X, so upon X. What is this C2? So epsilon naught A. Actually यहाँ पे K नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे K 1 है. Okay, upon what is this length? T. So length is T, but here this K is present, so multiply by K. And what is this C3? It is epsilon naught A upon length is what? Y, so upon Y. This type of situation. So you get the C1, C2, and C3. Now what is equivalence capacitors? So equivalence capacitance 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, C equivalence. Okay, so let's we derive, we put all this value here. So 1 upon C equivalence is equal to, you just write the reciprocal of this one, so X upon epsilon naught A plus write the reciprocal of this one, so T upon epsilon naught A into K. Write the reciprocal of this one, so Y upon epsilon naught A. See here epsilon naught A, denominator common, directly sum of this numerator. So 1 upon C equivalence is equal to X plus Y upon epsilon naught A plus T upon epsilon naught A into K. Take the epsilon naught A common from here. Okay, and here what is X plus Y? So total is D, उसमें से x प्लस वाई निकाल दो तो ये कितना रहेगा t. सो d माइनस टी करो आप, d माइनस टी तो x प्लस वाई आएगा. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्चुअली व्हाट? d माइनस टी. सो पुट दिस वैल्यू, सो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंस इज इक्वल, यहाँ पे आ गया d माइनस टी, यहाँ पे t बाई के को ले लो, सो प्लस t अपॉन के. इन होल दिस केस
एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया, तो एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो यहाँ पे क्या है x प्लस वाई मीन्स d माइनस की t एंड हियर t बाई के से रखो, तो t बाई के, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, so answer is what, C equivalence is equal to epsilon naught A upon d minus t plus t by k. So this is our answer. You must be remember this equation directly for a shortcut method. Okay, if you forget the derivation, no problem, that is nothing, that is not our problem actually, but you remember this equation. If you forget it, no problem, but remember this equation. Directly इस equation को आप shortcut में use कर सकते हो. You just get the answer within 1 minute. Okay, so you all of you guys must be write this theory in a additional note. Equation derivation की requirement नहीं है, आपको यही याद रखना है for MCQ. If this type of partial case is given to us, then how you get the answer of equivalence capacitance? So equivalence capacitance is given by this equation. Sequence is equal to epsilon naught A upon d minus t plus t by k, where k is a dielectric constant of substance. अगर वहां पे 2k है तो यहाँ पे k की जगह पे 2k रखना है. If there is a k1 then put this k1. वहां पे 3 है तो वहां आपको भी यहाँ पे 3 रखना है. T is a thickness of dielectric substance. Okay, so here you must be define these two terms where k is a dielectric constant and T is a thickness of slab. In this final equation, this x and y is not present. See, it means अगर आप स्लैब को यहाँ पे रखते हो मीन्स x डिक्रीज करो y इंक्रीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. So this capacitance does not depends on a position of a slab in a capacitor. ओके, एक्स और वाई रखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में आता है मतलब दिस इक्वेशन वॉट एवर यू गेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई इज व्हाट, इट्स रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ स्लैब फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड प्लेट एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड प्लेट. इट्स मींस वेरेवर यू प्लेट दिस स्लैब यू गेट द सेम आंसर. सो आपको यहाँ पे भी नोट्स बनानी है. यू मस्ट बी रिमेंबर दिस इक्वेशन, इक्विवेलेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन position of a slab, does not depends on position of a slab. You must be remember slab की position पे depend नहीं करेगा. Okay, and here we again we write one another notes and it is again very important. If this slab is made from the metal body, then what happen? Right now this is the dielectric substance. अगर यहीं पे आपने metal body रखा तो if the slab is made by metal, if slab is made by metal, that is a special case. If slab is made by metal, so what is the value of k for metal? So for metal k is equal to infinite. You put for metal k is equal to infinite. अब इस इक्वेशन में infinite रखो तो 1 upon infinite 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा. If you just put this slab which is made by the metal like copper, aluminium, then at that time this k becomes infinite. K becomes infinite with t upon infinite, it is 0. So this equation becomes finally after putting this one. So अगर metal का केस है तो इक्वेशन sequence is equal to epsilon naught A अपॉन डी माइनस सी. डायरेक्टली आपका आंसर यही होगा. ओनली फॉर मेटल, बट डायलेक्ट्रिक है तो इक्वेशन ही आएगा. ठीक है, तो इसका इक्वेशन का यूज कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे वेरी सिंपल. Actually we just solve out this one textbook illustration number 2.8 and this sequence we have to use this equation here. What is this illustration? As we already discussed this, we solve this illustration by this proper method. Okay, but if this type of this type of examples asked in MCQ, then at that time we are not calculate this whole example. We use this equation and we finally get this answer. Okay, what is the problem statement? Actually problem statement कुछ ऐसा था कि अगर कोई कैपेसिटर है ऐसे, उसमें 3d/4 थिकनेस का कोई स्लैब रखा डाइलेक्ट्रिक का, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस इसमें क्या था इनिशियली? लेट्स वी राइट द सॉल्यूशन. वी राइट द सॉल्यूशन हियर. ओके,
That is a problem statement, whatever I am just drawing here. This type of situation is given to us. So initially क्या था capacitance when the slab is not present. So C is equal to epsilon naught A upon D. Initially कुछ ऐसा था, ठीक है. Now after placing this, after insertion of slab, आपने अगर डायलेक्ट्रिक स्लैब को उस पर इंसर्ट किया ऐसे, तो ये इक्वेशन का यूज करो, डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा. सो सी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, क्योंकि ऐसा है ना, पार्शियली फिल किया, पार्शियली नहीं है, तो ऐसा कुछ होगा. तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के. So what is the T here? The T is a thickness of a slab. So what is the thickness of a slab? 3D by 4. यहाँ पे रख दो, आपका आंसर हो जाएगा. So C equivalence is equal to epsilon naught A upon D is what? D as it is. Sorry, D is what? 3D by 4. So that is 3D by 4 plus 3D by 4K. Okay. So D minus 3D by 4. That's a D by 4. So आंसर क्या हो गया? Is equal to epsilon naught A upon d by 4 प्लस 3d by 4 के. इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर क्या होगा सर? यहां से d को कॉमन निकाल लो. सो व्हाट यू गेट द फाइनल आंसर? सो C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, यहां से d को कॉमन निकाला तो d यहां पे आ गया. ओके, इस 4 को भी कॉमन निकाल लो यहां से 4 को. सो यहां पे जो डिनोमिनेटर में कहां पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में. Thus actually this d is as it is, but this d by 4, आपने d by 4 को ऐसे सपोज निकाला. ओके, सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर? सो 1 अपॉन d by 4 निकाला तो 1 प्लस 3 अपॉन k. सो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d is a C. That is the original capacitance. So finally you get this answer. C equivalence is equal to, इसका आंसर हो गया C. यहाँ पे 4 है और कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में. तो ये न्यूमरेटर में 4 चला गया, ठीक है. अपॉन यहाँ पे क्या है? देखो k यहाँ पे ले लो कॉमन. सो k प्लस 3, सो k प्लस 3 इनटू दिस k इज कम्स टू द न्यूमरेटर. सो दैट इज फॉर फाइनल आंसर. आपका आंसर इल्यूस्ट्रेशन नंबर 2.8 का देखना यही होगा. सो बाय दिस यूजिंग ऑफ दिस इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज इजीली सॉल्व बाय द सिंगल स्टेप. Okay, so whenever this type of questions is asked in any competitive examination, at that time use this equation directly. Okay, अगर यही एग्जाम्पल आपको बोर्ड में आता है तो जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है. बट द सेम एग्जाम्पल इज कम्स इन कॉम्पिटिटिव मीन्स फॉर MCQ. This type of exam asked in MCQ, then at that time use this shortcut method, you get the answer. See, directly you get the same answer. C is equal to what? Epsilon naught A upon D. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलो पूरी थियोरी और एग्जाम्पल की शॉर्टकट्स आप दोनों ही आपकी बुक्स में अच्छी तरह से नोट्स कर लो. Okay guys, let's come to this next example, capacitor with dielectric. Example, practice example number 1. What is the problem statement? A figure shows the two identical capacitor connected to the battery as shown in figure. Okay, तो यहाँ पे आइडेंटिकल कैपेसिटर C और C है, उसको बैटरी V के साथ कनेक्ट किया. ओके, नाउ अ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नाउ वन ऑफ द कैपेसिटर इज फीड विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K. तो मतलब यहाँ पे आपने कोई एक कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रखा, लाइक दिस. कैसे? दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, दैट इज व्हाट इनिशियल सिचुएशन. व्हाट यू डूइंग हियर? final situation, you are just insert a one dielectric slab into one of the capacitor, any one of those. Okay, here this battery is connected like this. So यहाँ पे capacitance C है, initially ये भी capacitance C है. Now you suppose you put some dielectric slab here. इस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है कि आपने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया ऐसे. सो नाउ वन ऑफ द कैपेसिटर फिल विद द डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द डायलेक्ट्रिक. सो अगर यहाँ पे एनर्जी जो है उसको आप U इनिशियल बोलते हो, यहाँ पे जो एनर्जी उसको आप U फाइनल बोलते हो, तो आपको फाइंड क्या करना है? Thus find the ratio of the energy stored in the system before and after.
So before means this, after means this. So you have to finding out u initial upon u final is equal to, that is your question. Okay, so very simple, you just find this here. What is the C equivalence for this one? C1 plus C2, both are in parallel. So you just find this, both this one, u initial and u final. So u initial is equal to 1/2 C equivalence into v square. So आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू 1/2 C equivalence का क्या है 2C, v तो v है तो into v square. So that is the u initial, that is equation number 1. Now here you get the answer, u final is equal to 1/2 C equivalence into v square. यहाँ पे भी v है, बट यहाँ पे इसका न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? व्हाट इज दिस न्यू कैपेसिटेंस? ऑलवेज कैपेसिटर, व्हेन यू जस्ट प्लेस एनी डायरेक्ट्रिक सब्सटेंस इन द कैपेसिटर, इस कैपेसिटेंस बिकम्स k टाइम्स. सो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा k into c. Okay, so this both are in now parallel. So 1/2, that's what is C equivalence. So kc plus c, kc plus c, so kc plus c into v square. थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो u final is equal to 1/2 into kc plus c. What is kc plus c? That's a k plus 1 into, यहाँ से c को कॉमन है, ठीक है, so c into v square. What is 1/2? सॉरी, यहाँ पे 2 को कैंसिल कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में थोड़ा करेक्शन. सो यहाँ पे u इनिशियल क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर, 2 कैंसिल, सी वी स्क्वायर हो जाएगा, जो भी इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ पे सी वी स्क्वायर जगह पे u इनिशियल रख दो, तो फिर आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दैट्स इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, what you get, u final is equal to 1/2 as it is, k plus 1 as it is. cv square is replaced by u initial, so cv square is replaced by u initial. Now you आपको फाइंड करना u initial upon u final. So find from here. So u initial upon u final is equal to u initial upon u final. So 2 यहाँ पे आ गया, k plus 1 डिनोमिनेटर में, so 2 upon k plus 1. This is your answer. Do you understand? Very simple. That's a very simple. By this way you just getting this answer. Okay, चलो एग्जाम्पल को नोट करो, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल चलते हैं. Okay guys, let's come to the next example. Example number 2. What is the problem statement? A figure shows a capacitor of 4 microfarad connected to the 10 volt battery. Means this 4 microfarad capacitor is connected to the battery like this. Initial situation is this one. Now when a dielectric slab of a constant k is equal to 2, so here you just put some dielectric slab like this. See, you consider initial situation is this one. Okay, that's the initial situation. Now what are you doing here? This figure is given to us. You have a one dielectric constant, you just place inside this one, dielectric constant is what 2. So you just put a one slab into the capacitor like this. You just put some additional slab in this capacitor. What happened here? Then find the work done by battery in supplying the excess charge to the capacitor. So we have to find a work done by battery. So what we have to find, WB is equal to what, for supplying the additional charge. So as we know, this is the case of batteries remains connected. This is the case of batteries remains connected. So when you just insert this one, suppose initial यहाँ पे charge मान लो Q initial था, तो यहाँ पे minus Q initial हुआ. So some charge is flow to this here. Then consider this new charge is becomes Q final, और यहाँ पे new charge हो गया minus Q final. Okay, so what is this Q initial actually? When this slab is not placed inside. So thus here the initial charge Q initial is equal to CV. So C is a 4, this one is a 10, so that is a 40 माइक्रोकूलम, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफेराड है तो 40 माइक्रोकूलम. व्हाट इज द फाइनल चार्ज? This is the case of battery remains connected and you place some dielectric slab into the capacitor. Okay, so here you must be right, this is the case of battery remains connected. If battery is connected to the circuit,
if battery is connected to the circuit, then here you write down the Q final is becomes K Q initial. As we know, the charge is becomes K times potential does not change. So K times, so K कितना है here? This 2. So that is becomes 2 into 40. That becomes 2 into 40. The answer is 80 microcoulomb. How much charge is already present? 40. Now the new charge is becomes 80. So we have to find the work done by battery during this process. So how much additional charge flow through the battery? Suppose delta Q is equal to Q final minus Q. So टोटल 80 माइक्रोकूलम फ्लो नहीं हुआ, वहां पे 40 था और 80 हुआ, तो फिर एडिशनल कितना चार्ज बैटरी में से फ्लो होता है? सो दिस सपोज टू बी डेल्टा Q, देन Q फाइनल माइनस Q इनिशियल. देन व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? As we know, work done by battery, W battery is equal to delta Q. सॉरी यहाँ पे स्मॉल q लिया तो यहाँ पे भी स्मॉल q, डेल्टा Q into potential of the battery. What is delta Q? Q final minus Q, 80 minus 40, so that is 40. चलो पूरा लिखते हैं, AC 80 minus 40 into V कितना है? 10. ओके, आंसर जो भी आपका है माइक्रो में आएगा. 80 minus 40, so 40 into 10, so 400 microjoule. That's this much of work is done by the battery during the insertion of a dielectric slab into the capacitor. During this process, this much of work is done. ओके, यहाँ पे 80 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो नहीं होता है ना, और यहाँ पे 40 भी नहीं होता है. इसका डिफरेंस जो है वो इतना फ्लो होता है. यहाँ पे ओकेशनली इसका आंसर 440 माइक्रोकूलम है, लेकिन ए नहीं है, ए भी नहीं है. इसका डिफरेंस जो भी आता है उतना चार्ज ही बैटरी में से फ्लो होता है. और व्हाट इज दिस वर्क डन बाय बैटरी? ऑलवेज Q इंटू वी, सो डेल्टा Q इंटू वी. ओके, सो बाय दिस वे यू जस्ट गेट दिस आंसर. चलो एग्जाम्पल को नोट करो. Okay guys, comes to this next one, and you just write this full topic in additional notes. Okay, this is the completely additional note, and this type of questions was asked only in JEE examination. Okay, this topic is important for only JEE examination, not for a NEET. You must be understand it. Now variable dielectric constant. Up to this one we consider any dielectric constant of the substance is constant. Okay, but if it is variable, then what happen? Then here you just using this type of equation. If the parallel connection is present, मतलब कि जो भी आपको दिया उसमें पैरेलल कनेक्शन बनता है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? C is equal to integration DC, और there is a series connection is present, then 1 upon C is equal to integration 1 upon DC. आपको इस इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करना है. Okay, here this one example is given to us. Let we have to try to solve out this problem. Now what is the problem statement? The figure shows a parallel plate capacitor having a square plate of HA. So HA means square plate. Square plate means this area of this plate is A by A, like this. See, this type of case is given to us. That's a upper plate, that's a lower plates. Okay, if you consider this figure like this, here is the square plate A by A. Here is a square plate. So what is the total area of this plate? Actually, if you write this total area, then it is a by A. You must be understand because it is a square plate. So this type of situation is given in a problem. Figure itni given hai, theek hai? Now we write something if we need anything. Let's see what is this. And thus the plate separation is D. The separation of this plate is D. The gap between the two plates is filled with the dielectric constant is K is equal to K0 plus alpha x. So thus whatever you just place at this dielectric, its constant is K0 plus alpha x, where K0 and alpha constant. So here in this equation, K0 and alpha is equal to what? Constant, and x is a distance from the left end. Then find the capacitors. X is distance from left end, मतलब कि यहाँ से if you consider here and this at this position x is equal to what? 0. If you consider this position, so left hand side से right hand side x increase हो रहा है, कब तक increase हो सकता है? A तक. So at this one x is equal to what? ऐसा भी दे सकते हैं आपको, x is along the D. ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, एक्स इज अलोंग द डी, लेकिन यहाँ पे तो एक्स जीरो होगा और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू डी, मतलब इसमें लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो से डी आती है और इसमें लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो से ये आती है.
आपको x कहां से कैसे चेंज होता है वो भी आपको फाइंड करना है. इफ x is along the x is starts from the left hand to right and then here you give the limit like this. If it is along the d, then x is 0 here, x is d here. Okay, so this type of situation is given to us. Then first of all you consider any small elemental section here. तो जैसे x चेंज हो रहा है along this x you just consider the strips like this. Okay, आपको dx लेंथ की स्ट्रिप लेने क्योंकि यहाँ पे dc है. तो x जो चेंज कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल x चेंज हो रहा है, तो फिर आपको कुछ स्ट्रिप ऐसी लेनी चाहिए. यहां पे यू जस्ट कंसीडर द स्ट्रिप लाइक दिस. यू कंसीडर दिस टाइप ऑफ स्मॉल स्ट्रिप. ओके, x जैसे चेंज हो रहा है वैसे आपको स्ट्रिप जो है वो चूज करनी है. ओके, सो यहां पे आपने ले dx लेंथ की स्ट्रिप ऐसे. You must consider a very small strip. अगर ऐसे चेंज हो रहा होता तो फिर आपको स्ट्रिप ऐसे लेनी चाहिए. Do you understand? How to just consider the strip is depends on how to this axis varies. So if x is varies horizontally, then you just take a dx like this and your strip is like this. If x is varies like this, then at that time in this case you just consider the strip like this. So dx is this one and the strip is this one. Do you understand? So that is a situation how to consider the small elemental section. So that is our method to consider small elemental section. So for elemental section, what is the, in this case what is the capacitance? For elemental section you just find the capacitance, then it is given as a dc, है ना. इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा dc. चलो फाइंड करो. सो dc इज इक्वल टू epsilon naught a upon d into k. That is original equation. This is the original equation. Now let's see, just made some change here. Capacitance dc is equal to epsilon naught a upon d into k. So into k. But this one, what is the elemental sectional area? It's a, no, it's a dA, small area. So here it you just replace it is a dA. The distance is same d, so no problem, distance is as it is. Now k is this one, so put the all value, you get the answer. So dc is equal to epsilon naught, what is a, sorry what is dA, area of this section, its width is dx. but अगर आपने ऐसे काउंट किया, देखो यहाँ पे प्लेट एक्चुअली ऐसे है कुछ, आपने यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप ली हुई है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने स्ट्रिप ली हुई है. सो दैट इज योर स्ट्रिप, कंसिडर ऐसे, दिस इज योर स्ट्रिप. अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो इसकी विड्थ कितनी है dx, बट उसकी लेंथ कितनी है a जितनी है ना, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर प्लेट है यहाँ पे. सो a बाय a है. तो अगर आपने ऐसी स्ट्रिप गिवन है आपके पास, तो इसकी आप यहाँ से देखो ऐसे, तो इसकी लेंथ कितनी है dx, दिस लेंथ, एंड दिस लेंथ इज व्हाट, स्मॉल है, तो उसकी लेंथ है स्मॉल है. तो एरिया टोटल कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा a इंटू dx into what is this k is equal to k0 plus alpha x. So k0 plus alpha x upon d. If anything is constant, then you just take side, take the some side, because we need integration. So dc is equal to epsilon naught a d is just take is common out, epsilon naught a upon d. The remaining terms you write in a bracket. So k0 plus alpha x into dx, we just formed it. Okay, so this is the capacitance. but how to decide, here the parallel combination is applied to series. अगर यहाँ पे ऐसा कैपेसिटेंस आपको गिवन है तो आप यहाँ पे फिगर ड्रॉ करो तो आपको थोड़ा आइडिया ज्यादा आएगा. देखो यहाँ, दैट इज द फर्स्ट प्लेट, हियर इट इज द सेकेंड प्लेट. so you just consider this type of number of strip, the strip number 1, strip number 2, strip number 3, 4. मीन्स अगर आपने ऐसे स्ट्रिप ली तो आपको क्या लगता है कैसे, पैरेलल में है या फिर सीरीज में. देखो यहाँ पे, ओके, यू जस्ट डिवाइड द एरिया, da सबका एरिया कितना है da.
ओके, सो हियर यू डिवाइड द एरिया, यहाँ पे आपने क्या डिवाइड एरिया, इफ यू डिवाइड द एरिया मीन्स दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे जो भी है वहां पे इक्वेशन कौन सा अप्लाई करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ capacitor. You just apply this equation. So dc plus dc plus dc plus dc up to the integration last one. So dc plus dc plus dc ऐसा अप्लाई किया तो फिर फाइनली आपका आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज गिवन बाय c is equal to integration dc directly, like dc plus dc n times. So that's the integration dc. तो आप इसका इंटीग्रेशन ले लो, चलो. So this epsilon naught a upon d is common out, sorry, in integration this one is what, k0 dx plus alpha x dx. Okay, and the limit is what, x is vary from 0 to a, so x is vary from 0 to a. So put the value, so epsilon naught a, sorry small है, my mistake, यहाँ पे small है, so epsilon naught small है upon d. k0 constant है, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, so k0 into x plus अल्फा कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन पावर 1 है, 1 पावर इंक्रीजेस, न्यू पावर कम्स इन द डिनोमिनेटर एंड लिमिट इज 0 to a. तो 0 लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं है, 0 तो 0 आएगा, यू जस्ट पुट ओनली द लिमिट a. सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इनटू k0 into a plus alpha into a square by 2, and if you put 0 then answer is 0. Then finally what is your C equivalence? So C equivalence is equal to, this a is common out, so epsilon naught a square upon d. So यहाँ पे आएगा k0, एक a निकल गया तो alpha into a by 2. So this is the finally your capacitance. Okay, similar way यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है. This is our right now answer. Now what is your homework? Here this whole problem is exactly same. Here we change this x is changed along the d. आपका आंसर होगा if k is equal to k0 plus alpha x. That is a new problem. Okay, that is a new problem. If k is equal to k0 plus alpha x, same, where k0 and alpha constant and x is equal to, x is changed along d, then find capacitance. ठीक है, अगर x ने x तो आप यहाँ इस तरह से यहाँ से चेंज होते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू d, तो फिर आपको यही कैपेसिटेंस फाइंड करना है. और आपका जो मतलब फाइनली आप इसका कैपेसिटेंस फाइंड करोगे तो आपका आंसर में यहाँ पे लिख दिया, तो आपका आंसर ये होना चाहिए. तो C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू अल्फा epsilon naught a square upon ln k0 plus alpha d upon k0. ओके, ये आंसर आपका होना चाहिए. तो फाइनली आप इसका अगर सॉल्यूशन करोगे तो आपका ये आंसर कुछ ऐसा रहेगा. और एक हिंट भी दे देता हूं, अगर आप x जो है along the d ले रहे हो, मतलब ऐसे ले रहे हो, तो आपकी स्ट्रिप कुछ ऐसे आएगी. ओके, और आपकी स्ट्रिप ऐसे है तो आप यहाँ पर d को डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे आपने a को डिवाइड किया लाइक दिस, देन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा और आपको इस इक्वेशन का यूज करना है. ठीक है, क्लियर है सबको? तो लिमिट भी आप अपने हिसाब से उसे रख देना और इंटीग्रेशन करना, फाइनल आपका आंसर जो है हो जाएगा. ठीक है, चलो पूरा एग्जाम्पल नोट्स कर लो और ये एग्जाम्पल आपको घर पे करना है, आंसर कुछ ऐसा रहेगा. चलो नोट्स करो.